We are now going to study section formula. What is section formula? Let's understand. This is xy plane, x dash, y. This is y and this is y dash. Okay? Now, we took a segment AB, this is oblique. Seg AB is neither parallel to x-axis nor parallel to y. This is oblique. Oblique का मतलब inclined is. A and B are the endpoints of the segment AB, where A is x1, y1, coordinate of A is x1, y1, coordinate of B is x2, y2. Suppose P is somewhere on segment AB such that the ratio of AP upon PB is M upon N. इसका मतलब क्या है समझने की कोशिश करें. Suppose if I draw a perpendicular, say AC to x-axis, PQ perpendicular to point Q at x-axis, and BD is perpendicular at point B on x-axis, then you can see all these three perpendiculars are on the same line. They are perpendicular to the same line, so they are parallel to each other. So we can say seg AC parallel seg PQ parallel seg BD. So these three lines are parallel. चाहे तो मैं लिख दो seg AC parallel seg PQ parallel seg BD, and the two transversals are AB and this x-axis. So when three parallel lines intercepts two transversal, then three parallel lines intersects two transversal, then it will form intercept. See, AP and PB are the intercept formed on AB. CQ and CD are the intercept formed on x-axis. So the ratio AP or AP upon P equal to CQ upon CD. This we studied in intercept of three parallel lines. Now this ratio is M upon N, suppose. Okay, then what is CQ? Using distance formula, it is x minus x1 plus 0, 0 गया, square root निकाल दो, so you get this formula. ये मिलता है अपने को x minus x1 और QD in short, क्योंकि वो x number line पे है, we don't have to use the distance formula. You can use 9-sided way of finding distance. That is the bigger coordinate minus smaller coordinate, x minus x1. And distance QD will be larger coordinate minus smaller coordinate, x2 minus x. Now what is the ratio of CQ upon QD? It will be x minus x1 upon x2 minus x equal to m upon n. Cross multiply करो, you get this m into bracket x minus x1 equal to m into bracket x2 minus x1. Open करो bracket, mx minus nx1 equal to mx2 minus nx. Now mx को उस साइड लेके आओ. I am taking only x terms together on left hand side and x1 and x2 on right hand side. So ये mx1 right hand side पे आ जाएगा, becomes positive. mx minus mx left hand side पे गया, becomes positive. So we get mx plus nx equal to mx2 plus mx1. इसमें से x कॉमन निकालो, अंदर क्या बचेगा? m plus n. This as it is. Now dividing both sides by m plus n. Okay, what you get x value? X will be x value. This value will be m into x2 plus m into x1 upon n plus n. Similarly, we can find y value will be m into y2 plus n into y1 upon n plus n. ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला. अब इसका अप्लाई करो मिड पॉइंट में. सपोज ए
x1, y1 and b, x2, y2 are the endpoints of the segment, and xy is the midpoint. अगर midpoint हो गया तो m will be equal, m upon n will be 1 upon n. इसका मतलब m and n will be equal. This ratio will be, intercept का ratio equal हो जाएगा, equal intercepts हो जाएगा. So ये m1 है. See, this will be 1x2 plus 1x1 upon 1 plus 1. तो ये होगा x will be x2 plus x1 upon 2 और ये होगा y2 plus y1 upon 2. ये midpoint formula. अब centroid लिखेंगे. Centroid समझने की कोशिश करो. What is a centroid by definition? When all the three medians of a triangle intersect each other in a single point. एक तीनों median जो है ना एक ही जगह पे intersect हो रहा है. Then that's called a centroid. Suppose we take a triangle ABC. इसके vertices हैं A, उसका coordinates है x1, y1, B, x2, y2, C, x3, y3 are the coordinates of the triangle ABC. Or G is a centroid, so it means AD has to be median. Now centroid divides the median in ratio 2:1. ये अभी आपको शायद मेरे ख्याल से 9th में हुआ होगा, याद नहीं आ रहा मुझे. देखो, अगर नहीं तो समझ लो कि ये रेशियो है. ओके, अभी इसके एक्सप्लेनेशन के लिए नहीं जाऊंगा, अपनी जरूरत भी नहीं है. मैं नॉट गोइंग टू आस्क यू, ओनली यू शुड नो दिस रेशियो. वर्टेक्स से सेंट्रॉइड तक 2 पार्ट्स एंड सेंट्रॉइड से मिड पॉइंट तक 1 पार्ट. Then this x coordinate will be x1 plus x2 plus x3 upon 3 और ये होगा y will be y1 plus y2 plus y3 upon 3 बस इतना ही फॉर्मूला. ये 3 फॉर्मूले हम इस्तेमाल करने वाले हैं. Now let's start with practice set 5.2. Look at the question. They say, find the coordinates of P if P divides the segment joining the points A, उसके coordinates है -1, 7 and B, उसके coordinates है 4, -3 in a ratio 2:3. Find the coordinates of point P. Let co-ordinates of point P be x, ये दिया हुआ है. ओके, सपोज सपोज उन्हें h2:1 दिया है ना. Suppose coordinates of A and B are x1, y1 and x2, y2 respectively.
and m upon n is, they are given us the ratio m upon n is 2 upon 3. Therefore, what will be x1? x1 y1 क्या होगा? x2 y2 क्या होगा? और m upon n क्या होगा? Just write down. What will be x1? x1 will be, उन्होंने a दिया है 1 minus 1. a given to you as minus 1 comma 7. b as 4 comma minus 3. M upon n is 2 upon 3. So लिख देते हैं minus 1 7 4 minus 3 2 upon 3. Therefore, by using section formula, x will be, ये x की वैल्यू क्या होगी? mx2 plus nx1 upon n plus n, and y will be my2 plus ny1 upon n plus n. सब्स्टिट्यूट करो ये सब वैल्यूज में. Therefore, x will be n कितना है 2. x2 is 4. n is 3. x1 is minus 1 upon 2 plus 3. x होगा 8 minus 3 upon 5. It will be 5 upon 5. So x will be 1. x की वैल्यू आ जाएगी आपको 1. y की वैल्यू देखो. y2 is minus 3. m is 2. So 2 into minus 3 plus n is 3. 3 into 7 upon 2 plus 3. Y equal to minus 6 plus 21 upon. So it will be 15 upon 3. So y will be, so क्या है coordinates of point y क्या है? Therefore coordinate, उन्होंने क्या पूछा है? Find the coordinates of point. Answer. Therefore coordinates of point P are 1 comma 5. We now go to next question. देखो क्या दिया उन्होंने. In each of the following examples, now they are given you in question number 2 few examples in which they have given you the coordinates of point A which divides the segment PQ in the ratio A is to B. So हमें ये सब लिख लेना है ताकि हम फटाफट जा सकें. तीनों पॉइंट लिख लेते हैं. पहला क्या है? P is minus 3 7. P is minus 3 7.
Q1 and minus 4. And ratio is A is to B is 2:1. Second, minus 2 minus 5. Four and 3. 3:4. Ratio is 3:4. 2 and 6 third. 2,6. Q का क्या है? -4 1 and A is to B is 1:2. They are given us here that point A divides segment PQ in the ratio 2:1. So let's start. Section formula सब में इस्तेमाल करना है. Question 2 का solution 1. Let co-ordinates of point A be x, y. Suppose co-ordinate of P be x1, y1 and Q be x2, y2. A divides set PQ in a ratio A upon B, that is 2 upon. Therefore, using section formula, x क्या होगा? 8x2 plus bx1 upon a plus b और y होगा ay2 plus by1 upon a plus b. Let's start now. Therefore, x will be a कितना है 2. घाई कर दी, थोड़ी घाई करते हैं. हमें वो लिखना है भाई. व्हाट इज x1 और आसान पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो अपने को वहां से. Therefore, x1 क्या है लिखो, x2 क्या है लिखो, कॉमा के बाद y1 y2. x1 is -3, y1 is 7, ये है 1, ये -4. Now you start using section formula. X is equal to a x2 plus b x1 upon a plus b. और y क्या होगा? ay2 plus by1 upon a plus b. सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज. x is equal to a कितना है 2, x2 is 1 plus b is 1, x1 is -3 upon 2 plus 1.
y क्या है, पहले सॉल्व करते हैं. Therefore x is equal to 2 minus 3 upon 3. Therefore x is equal to minus 1 upon 3. ये x कोऑर्डिनेट होगी. अब यहाँ पे 2 into minus 4, देखो ये 2 और ये y2 का minus 4 plus b is 1 into y1 is 7 upon 2 plus 1. Therefore y equal to minus 8 plus 7 upon 3. Therefore y equal to यहाँ भी minus 1 upon 3. Final answer. Therefore co-ordinates of A is minus 1 upon 3 comma minus 1 upon 3. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे, बाकी सब तो सेम है, तो सिर्फ इसको चेंज करेंगे. That's why I wrote like this. तो आपको we will save time. बाकी तो सेम ही है ना. क्वेश्चन नंबर चेंज करना है आपको. दिस क्वेश्चन नंबर 2 नाउ सॉल्यूशन 2. उन्होंने दिया है, बाकी सेम है. ये x विल बी -2, y1 विल बी -5, q x2 विल बी 4 एंड y2 विल बी 3. सब्स्टिट्यूट कैसे करोगे फॉर्मूला में, ये a is 2, x2 is 4 plus 1 into minus upon 2 plus 1. Solve करो. This is 8 minus 2 upon 3, 6 upon 3. That will be nothing but 2. 3 1 are 3. अब ये a is 2. y2 is 3, 1 into minus upon 2 plus 1. तो ये कितना आता है, 3 2 6 minus 5 upon 3. This is nothing but 1 upon 3. So आएगा आपके कोऑर्डिनेट्स 2, 1 upon 3. ये है आपके कोऑर्डिनेट. ये गलती कर दिया नहीं, रॉन्ग है ये. प्लीज हमने क्या किया, देखो हमने रेशियो चेंज नहीं किया. रेशियो चेंज करना है भाई. इट इज 3:4. तो ये चेंज हो जाएगा, ये सेम नहीं आएगा, ये 2 नहीं आएगा. सो इट इज नाउ 3, x2 is 4, b is 4, x1 is -2. ध्यान दो ना, रेशियो की तरफ ध्यान दो. So this is 3 plus 4. So you get 12 minus 8 upon 7. So this will be 4 upon 7. So this is 4 upon 7 आता है इस बार. Next question है coordinates. So ये आएगा, a की वैल्यू है 3, y2 is 3 plus 4 minus 5 upon 3 plus 4. तो ये आएगा 9 minus 20 upon 7. तो ये होता है -11 upon 7. ये है आंसर. 4 upon 7 minus 11.
नो आई फॉरगॉट, ये बराबर आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तब तक पढ़ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले अभी रेशियो पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ये रेशियो चेंज होगा, कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, नेचुरली दिस विल चेंज। चलो अब कोऑर्डिनेट क्या है, सॉरी पहले रेशियो क्या है, 1/2। कोऑर्डिनेट x का कोऑर्डिनेट 2, x1 का कोऑर्डिनेट 2, y1 is 6, q का क्या है -4 and 1। अब सब्स्टिट्यूट करते हैं, a का वैल्यू 1 है इंटू -4, 1 इंटू -4 प्लस 2 इंटू 2, 1 प्लस 2, ये आता है -4 प्लस 4/3, that is 0/3, 0 only। 1 into 1 plus 2 into 6 upon 1 plus 2, ये आपका आएगा 1 plus 12/3, 13/3, 0,13। With that, we completed question number 2. Now we go to question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट t 1,6 t ratio t -1,6 divides sec PQ P का कोऑर्डिनेट कितना है, -3,10, Q is 6, -8। हमें फाइंड करना है इन व्हाट रेशियो दिस पॉइंट T डिवाइड्स सेगमेंट PQ। मतलब हम एज्यूम करते हैं, सपोज वी एज्यूम सपोज दैट point T divides a segment PQ in a ratio m is to n. So start. Solution. Suppose T point T divides sec PQ in ratio m is to n. Okay. Let coordinates, तो ये लिखो let और ये लिखो suppose of
P and Q are x1 comma y1 and x2 comma y2 respectively. Also, coordinate of T be x comma. Therefore, x what will x क्या होगा? X is -1, y is 6. What is x1? -3, y1 10. x2 is 6, y2 is -8. Now, using section formula, we know x is equal to mx2 plus nx1 upon n plus n, and y will be my2 plus ny1 upon n plus n. Therefore, -1, x की value है -1, n, x2 is 6, n, x1 is -3 upon n plus n. So cross multiply करो, you get minus n plus n, or you can simply write minus n equal to 6n minus 3n. n एक साथ लो, therefore minus n minus 6n equal to minus 3n plus n. So this will be minus 7n equal to minus 2n. Therefore n upon n is 2 upon 7. Minus minus gets cancelled. तो इसकी जरूरत ही नहीं है. आ गया फाइनल आंसर. Therefore, point P divides sec PQ in the ratio 2:7. अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें. P is the center of circle, AB is the diameter. Find the coordinates of point B if coordinates of point A and P are given to you. Okay, इरेज करते हैं इसको. No, they are given us a circle. Circle here. P is the center of a circle and AB is the diameter. ये P center of a circle है. समझो AB is the diameter. Okay, P is the center of AB. Find the coordinates of point B. हमें ये find करना है. इसके coordinates. तो इसके coordinates तो हम जानते हैं. इसको हम x2 y2 ले लेते हैं. Coordinates of A is 2, 3. ये 2, -3 है. And P is
गया देखिए. Point P is the center of circle and seg AB is the diameter. Okay. Find the coordinates of B. चलो हमने B find करना है x2 y2. If coordinates of A is 2, -3 and P is -2, 0. ये -2, 0 दिया हुआ, ये x and y होगा. Solution. देखो ये P is the center, so ये AP will be equal to BP, area of the same circle. So P becomes midpoint of the segment AB. Okay. So midpoint theorem, midpoint formula system. Let coordinates of B be x2, suppose coordinates of A are x1, y1 and P are x, y. Therefore x कितना है -2, y कितना है 0, x1 कितना है 2, y1 -3. You will find x2 and find करना है x2 and y2 using. अच्छा लिखो पहले यहाँ seg AB is diameter of circle. Therefore, AP equal to BP. Radii of same circle. Therefore, point P is midpoint of seg AB. Therefore, point P divides seg AB in ratio m upon n, which is equal to 1 upon 1. Therefore, using midpoint formula, x will be x1 plus x2 upon 2, y will be y1 plus y2 upon 2. So x कितना दिया है -2 equal to 2 plus x2 upon 2. Therefore 0 -3 plus y2 upon 2. ये क्या होगा -4. 2 into -2 is -4 equal to 2 plus x2. और ये 0 into 2 is 0. -3. Therefore -4 -2 equal to x2. 0 plus 3 equal to y2. Therefore x2 equal to -6. y2 equal to 3. Therefore, coordinates of point B, coordinates of point B are -6, अभी प्रैक्टिस सेट 5.2 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं ना. दे आर गिवन अस, देखो क्या किया है उन्होंने. दे आर गिवन अस
PK comma 7 divides segment AB. We have to find the ratio in which P divides seg AB, means M upon N हमें find करना पड़ेगा. And they are given us coordinates of A and B. तो हमें क्या find करना है? K find करना है, that is x coordinate of P, और ratio भी find करना है. Okay, हमें section formula से ही जाना पड़ेगा. Okay, let us proceed. क्या करेंगे? Solution start करते हैं. Let P divides segment AB seg AB in ratio M is to N. Suppose coordinates of A, B and P be x1 comma y1, x2 comma y2 and x comma y respectively. तो अभी लिखो what is x1 and what is y1. बाद में लिखो what is x2 and what is y2 and what is x and y. देखो x1 जो है ना वो ये है x1 y1, so 8 और ये 9, x2 y2 ये है 1 and 2 और x और y ये है k and 7. Using section formula. देखो हमारे पास 3 अननोन है. कौन से 3 अननोन है? M and N अननोन, K भी अननोन. सो K इज द x कोऑर्डिनेट, बराबर ना. इसलिए मेहरबानी करके we'll find first M and N but don't use x कोऑर्डिनेट. x बिना x कोऑर्डिनेट के हमें यूज किया, हमें करें मतलब y कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल करना है टू गेन M and N. देयरफॉर ये इस्तेमाल करना है. Therefore, y equal to my2 plus ny1 upon m plus n. ये क्या होगा? 7. m मालूम नहीं है, y2 is 2. n मालूम नहीं है, y1 is 9. This is m plus n. इसको यहां लेके जाओ. 7m plus n equal to 2m plus 9n. Open करो ये. 7m plus 7n equal to 2m plus 9n. So take 2m on left hand side and 7n on the right hand side. So m सब left hand side में और n सब right hand side. 7m minus 2m equal to 9n minus 7n. So 7 minus 2 will be 5m equal to 2n. Therefore, m upon n will be 2 upon 5. तो ये अपने को रेशियो मिल गया. Now, again use section formula. Now use x coordinates. X is equal to mx2 plus nx1 upon m plus n. What is xk? m कितना है? 2. x2 is 1. n कितना है? 5. x1 is 8 upon 2 plus 5. Therefore, k is 2 ones are 2. 8 5s are 40 upon 7. So k is 42 upon 7. K is 6 7s are 7 6 are 42.
तो वी गॉट रेशियो ऑल्सो एंड वी गॉट कोऑर्डिनेट के ऑल्सो. सो क्या पूछा है उन्होंने? फाइनल find the ratio and also when. Okay. Therefore answer लिखो. Point P divides sec AB in ratio 2:5 and value of K is equal to 6. Now we go to question number 6. Question number 6 पे जाओ. Now let's see question number 6 क्या है. पढ़ते हैं. Find the coordinates of midpoint of segment joining points उन्हें दो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं. $22.20 और दूसरा 0,16. Find the coordinates of midpoint of the segment whose endpoints are this. उसका कोऑर्डिनेट ये. So हम सॉल्यूशन लिखते हैं. Let $22.20 let's seg AB let $22.20 and 0.16 be coordinates of points A and B. Let N be the midpoint of sec AB. Suppose the coordinate of A and B be x1, y1 and x2, y2. Let coordinate of midpoint M be x, y. Therefore, by midpoint formula, x will be x1 plus x2 upon 2 and y will be y1 plus y2 upon 2. Substitute करो x as it is. या हम लोग एक पॉइंट भूल गए लेकिन कोई बात नहीं, याद रखो x1 is 22. लिख लेते हैं एक पॉइंट. हम हमेशा लिखते हैं
y2 skip. लिखेंगे तो आसान होगा. So write down. Therefore x1 equal to or y1 equal to x2 equal to x1 is 22, y1 is 20, x2 is 0, 16. Therefore, using midpoint formula, x is equal to x2 plus x1 upon 2, y equal to y2 plus y1 upon x क्या है, कुछ दिया नहीं, फाइंड करना है. What is this 2? 0 plus 22 upon 2. Y is 20 plus 16 upon 2. So ये होगा 22 upon 2, that is 11, and y equal to 36 upon 2 is 18. Therefore, answer, co-ordinate of midpoint of given segment is 11, 18. अब क्वेश्चन नंबर 7 पे जाएंगे. वी हैव टू फाइंड सेंट्रॉइड. हमें सेंट्रॉइड फाइंड करना है, तो आई विल राइट डाउन ऑल द 3 क्वेश्चंस हियर. तो हम लोग फटाफट इसको सॉल्व कर सकें, एक साथ ले लेंगे. क्वेश्चन 7 में पहला क्या है, -7 6, 2 - 2 8 5, 2 - 2 8 and 5. Second, 3 - 5 4 3, 3 - 5 4, 3, 11, -4. Third question, 4, 7, 8, 4, 4, 7, 8, 4, और एक पॉइंट है 7, 11. हमें सेंट्रॉइड इस्तेमाल करना है. वी हैड यूज फॉर्मूला ऑफ अ सेंट्रॉइड. तो कैसे करेंगे इसको हम लोग, सॉल्यूशन 7. फर्स्ट एक अज्यूम करो, ये A है, -7, 6, ये B है, 2, -2, C है, 8, 5, और ये अपना सेंट्रॉइड है, ये G है, x, y. वी हैव टू फाइंड x, y. तो इसको हम लेंगे x1, y1, इसको x2, y2, इसको x3, y3. I drew this figure for your understanding. एग्जाम में भी ऐसे ड्रॉ करोगे चलेगा, लेकिन लिखना पड़ेगा. लेट, देखो मैं क्या लिख रहा हूं, हाउ आई एम राइटिंग. लेट the
3 vertices of triangle B A comma B comma C with coordinates x1 comma y1 x2 comma y2 and x3 comma y2. Let G x comma y be the centroid using, अच्छा उसके पहले हमें वो x1 y1 सब लिख लो. Therefore x1 x2 x3 तीनों लिख लो. y1 y2 y3. x1 क्या है? -7, y1 is 6, x2 is 2 and y2 is -2, x3 is 8 and y3 is 5. Therefore, using centroid formula, x is equal to x1 plus x2 plus x3 upon 3 and y equal to y1 plus y2 plus y3 upon 3. So x क्या होगा? स्क्वायर करो. -7 plus 2 plus 8 upon 3. Y is 6 minus 2 plus 5 upon 3. X क्या होगा? 10 minus 7, 3 upon 3. Y is 4 plus 5, 9 upon 3. So X is equal to 1. Y is equal to 3. Answer. Therefore, coordinates of centroid is 1, 3. पहला पार्ट हो गया. सिंपल है. First completed. Now we go to next. हम सिर्फ ये चेंज करेंगे. Now solution 2. A को हम लोग 3, -5, B is 4, 3, C is 11, -4. So x1 क्या होगा? 3, y1 is -5, x2 is 4, y2 is 3, x3 is 11, ये 11 है और ये -4. सेंट्रॉइड क्या होगा? 3 plus 4 plus 11 upon 3. 7 plus 11, 18 upon 3. Therefore, x is equal to 6. ये क्या होगा? -5 plus 3 minus 4 upon 3. -9 plus 3 is -6 upon 3. Therefore, y is equal to -2. The centroid is 6, -2. Second question completed. Abhi third.
4,7, 8,4, 7,11. So write down what is x1, y1, 4, 7, x2, y2 is here, 8, 4, x3, y3 is here, 7, 11. सेंट्रल फॉर्मूला से करो 4 plus 8 plus 7 upon 11. So 12 plus 7, 19 upon 11. सब पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव है ना. All are positive. 7 plus 4 plus 11 upon 3. 18 plus 4, 22 upon 3. ये हो गया आपका थर्ड आंसर. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ. एट भी थोड़ा सा ऐसे ही है, तो इसको इरेज नहीं करेंगे. क्वेश्चन नंबर 8 देखो. ट्राइंगल एबीसी जी इज अ सेंट्रॉइड. जी इज अ सेंट्रॉइड -4 -7 दिया उन्होंने. सो ये कितना दिया हुआ है? -4 -7. ए इज 14 -14 -19. बी इज 3,5. We have to find x3 and y3. So let the three vertices of triangle ABC with coordinates, ये हो गया. Let centroid ये हो गया. यहां तक तो सेम है. So x और ये y. What is x and y? ये -4 और ये -7. सेंट्रॉइड के लिख दिए फॉर्म. y x1 और x ये कितना है? -14 -19 और ये है 3 एंड ये है 5. वी हैव टू फाइंड x3 y3 फाइंड करना है यूजिंग centroid formula. This solution 8. X equal to x1 plus x2 plus x3 upon 3. Y equal to y1 plus y2 plus y3 upon 3. X is given to as -4. x1 is -14 plus 3 plus x3 फाइंड करना है. यू हैव टू फाइंड x3. हाँ, तो पहले ये सॉल्व करते हैं. Therefore -12 equal to -11 plus x3. So -12 plus 11 equal to x3. So x3 equal to -1. अब यहाँ आते हैं. y is -7. y1 is 19 plus y2 is 5. y3 have to find out.
So we get minus 21 equal to minus 19 plus 5 is minus 14 plus y3. Therefore, minus 21 plus 14 equal to y3. So y3 is nothing but minus 7. Final answer. Therefore, co-ordinate of vertex C is minus 1, comma minus 7. ये हो गया आपका आंसर. क्वेश्चन नंबर 8. अब क्वेश्चन नंबर 9 भी थोड़ा सा ऐसा ही है, तो सिर्फ यही इरेज करेंगे. Read the question first. A, B and C are the coordinates of the vertex of a triangle. So A, let's see. If A, B and C, अच्छा और सब A is H comma, ये सेंट्रॉइड है. A is H comma minus 6, B is 2 comma 3, C is minus 6 comma H. सेंट्रो नहीं माइनस के H comma minus 6 2 comma 3 minus 6 H and centroid is 1 comma 5. ये x comma y है, x3 comma y3. I read for you. Question number 9. They are given us a triangle ABC where A, B, C are the vertices of a triangle. The coordinates of triangle A of vertex A is H comma minus 6. Vertex B का coordinate है 2 and 3. Vertex C का coordinate है 6 and K. Centroid का coordinate है 1 comma 5. And now we have to find H and K. बहुत आसान है. Let the vertex of a triangle be ABCD with coordinates x1, y1, x2, y2, x3, y3. Let GB, G, x, comma, y be the centroid. So, what will be x? x1 y पहले लिखो, देन x1 लिखो, बाद में x2 लिखो, बाद में x3 लिखो, देन y1 लिखो, y2 एंड y3. चलो x क्या है 1 and 5, x1 क्या है h and minus 6, x2 y2 क्या है 2 and 3, x3 y3 क्या है minus 6 and k. सब्स्टिट्यूट करो and get h and k. Therefore 1 ये ऐड करो h plus 2 plus minus 6 upon 3. सॉल्व करो इसको. We get 3 equal to h plus 6 minus 4 is minus, sorry 2 minus 6 is minus 4. So 3 plus 4 equal to h. So h is equal to 7. Y.
y इज 5, इन तीनों को ऐड करो, -6 + 3 + k अपॉन 3, सॉल्व करो इसको, 3 5 are 15 equal to -3 + k, so k is equal to 15 + 3, k is equal to 18. Answer. क्या पूछा है? Find h and k. Therefore, values of h, value of h equal to 7, k equal to 18. Now we have question number 10. ये अलग है, यहां से अलग क्वेश्चन चालू होता है. 10, 11, 12. This was question number 9. ये क्वेश्चन नंबर 9 था, ये जो अभी किया. Now question number 10. We'll read now question number 10. Find the coordinates of the points of Find the coordinates of the point of trisection of line segment AB with A and B. A का कोऑर्डिनेट है 2,7, B का कोऑर्डिनेट है -4,8. कोई बात नहीं, इसको हम लोग आगे जाते हैं. गुरुदेव सदगुरु. ट्राइसेक्ट्स दिया है. See what they say, find the coordinates of points of transection. इसका मतलब ये सेगमेंट ए बी को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, 1, 2 and 3 इक्वल पार्ट्स. तो ये हम लोग लेते हैं पॉइंट पी को, दिस कंसीडर्ड एज पॉइंट पी एंड दिस इज कंसीडर्ड एज पॉइंट क्यू. सो नाउ वी हैव ट्राइसेक्टेड. This is 1 part, this is 2 part, and this is the 3rd part, 3 part. Coordinate of first and last is given, मतलब A और B दिया है 2,7 and -4, -8. 2,7 and -4, -8. बराबर है ना? Okay. We have to find, ये समझो x1 y1, ये है x2 y2, ये इसको x2 y2 लेते हैं, इसको x3 y3, और इसको हम समझते हैं ये x4 y4. ओके, सो लेट सॉल्यूशन चालू करते हैं. लेट P x2 y2 and Q x3 y3 are the points of ट्राइसेक्टिंग या सेक्शन को नहीं, इस ट्राइसेक्शन इस्तेमाल किया. ओके, ऑफ ट्राइसेक्शन
of seg AB where A x1 y1 and B x2 x4 y4. Two comma 7 minus 4 comma minus 8. Suppose coordinates of A and B are x1 comma y1 and x4 comma y4. ये तो हमने लिख लिया. अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें लिखना है. सिंस दे आर दिस डाइसेक्शन है तो ऑल पॉइंट्स आर इक्वल. देयरफॉर AP, ध्यान दो मैं क्या कर रहा हूं. AP इक्वल टू PQ इक्वल टू QB फ्रॉम गिवन. मैंने ट्राइसेक्शन के पॉइंट्स P और Q लिए हैं. दैट मीन्स P and Q divides this segment AB into 3 equal parts. AP equal to PQ equal to QB. ये फ्रॉम डेटा. ओके, अब हम लोग क्या लिख सकते हैं. Therefore हियर लिख सकते हैं. हियर हम लोग रेशियो लेते हैं. What is AP upon PQ or PB? What is AP upon PB लेते हैं. AP upon ये रेशियो लेना है हमें. सो हियर AP upon PB. PB इस क्या है. PQ प्लस QB. So this is AP upon AP plus AP. देखो PB is PQ plus QB because they are between. एक लाइन लिख देते हैं यहाँ. P dash Q dash B. Therefore you can say AP equal to AP plus AP. देखो they are equal to AP. So we can write this as AP upon 2AP. This is 1 upon 2. So AP upon PB is 1 upon 2, that is M upon N. Therefore point P divides seg AB in a ratio 1:2. अभी हमें सेक्शन फॉर्मूला इस्तेमाल करना है. ये वन पार्ट देखो, ये दिस फ्रॉम हियर टू हियर वन पार्ट and from here to here it is 2 part. M is 2N. M is 2N. स्टार्ट करते हैं यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला. अभी हमें फाइंड करना है P का कोऑर्डिनेट. सो x2 विल बी M इंटू x4. देखो हमें सेगमेंट AB लेना है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट और इसका ये, तो इसको फॉर टाइम बीइंग इसको भूल जाओ. फॉर टाइम बीइंग इसको भूल जाओ. वी आर टेकिंग दिस रेशियो. ओके, सो यू हैव टू फाइंड दिस. सो ये x1 y1 x4 y4 एंड यू हैव टू फाइंड दिस एंड दिस आर द रेशियो इन विच P डिवाइड्स. सो ये होगा आपका M into x4 plus N into x1 upon M plus N. सेम y के लिए y2 will be
m into y4 plus n into y1 अपॉन m प्लस रेशियो 1:2 याद रखो. व्हाट इज x2 वैल्यू फाइंड करनी है. x2 विल बी m is 1, x4 minus 4, n 2, x1 2, 1 plus 2. So x2 क्या होगा? -4 plus 4 upon 3, that is 0. So मुझे x2 0 मिला. x2 equal to 0 मिला. y2 देखते हैं. m कितना है? 1. y4 is -8 plus 2. 2 into y1 is 7. y2 is -8 plus 14 upon 3. 6 आएगा. 6 upon 3. So y2 is 2. तो 0 and 2 रेशियो मुझे मिला 0,2. Therefore coordinates of point P is 0,2. अभी आते हैं इसको फॉर टाइम भी भूल जाओ अभी इसको. अभी हमें Q चाहिए. Q is x3 y3. अब Q के लिए आई टेक PQ एंड BQ. इसको मैं भूल जाता हूं. सो PQ is equal to QB. So Q becomes midpoint. So use midpoint formula. Now here Q is, इसको इक्वेशन 1 लेते हैं. Q is midpoint of sec PB from 1. Therefore अभी लिखो जो भी है x2 कितना है? x2 y2 लिखो. x4 y4 लिखो. क्या है? x2 0, y2 2, -4 and -8. Using Q, x3 y3 is using midpoint formula. x3 चाहिए अपने को. midpoint आप जानते हो x2 plus x4 upon 2 and y3 will be y2 plus y4 upon 2. So x3 क्या होगा? y2 is 0 plus -4 upon 2. So x3 will be -4 upon 2. So x3 will be -2. y3 फाइंड करना है. y2 is 2 plus of -8 upon 2, it is -6 upon 2. So y3 is nothing but -3. Therefore coordinates of point Q is -2, -3. हो गया ये. क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट.
अभी हम ऐसे ही करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को। पहले इसको इरेज करना पड़ेगा। इसको समझो, दिस पार्ट को समझो ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे ऐसे ही, तो यूल अंडरस्टैंड। Eleventh question. Let A and B be given. Find the coordinates of point which divide segment AB into 4 equal parts. हमने ट्राइसेक्शन देखा था। We have seen trisection. Trisection means 3 equal parts. अभी जैसे 4 इक्वल पार्ट्स, मतलब ए बी है, यहां P, ये Q और ये R। सो ए का कोऑर्डिनेट देख लेते हैं क्या है। दिस विल बी x1, y1। बी का कोऑर्डिनेट लिख देते हैं, व्हाट इज दैट। इसको लेते हैं x4, y4। इसको P लेते हैं x2, y2। इसको Q, x3, y3। इसको R। अच्छा, ये 5 हो जाएगा तो x को y4 एंड दिस विल बी x5, y5। अब B के कोऑर्डिनेट क्या है देख लेते हैं। A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -14, -10। -14, -10, ये x1, y1 है। एंड B is 6, -2। ये x5, y5 है। We have to find x2, y2, q x3, y3 फाइंड करना पड़ेगा और x4, y4 भी कहीं फाइंड करना पड़ेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। Solution. Let P x2, y2, Q x3, y3 and R x4, y4 divide seg AB into 4 equal parts where A minus A, where endpoints of seg AB are A -14, -10 and B 6, -2. सपोज ये तो इसका क्यों इतना ही x1, y1, x2, y2. Now write down equal segments. Therefore, AP equal to PQ equal to QR equal to RB. ये है from given. इतना समझ लो पहले।
थोड़ा हीट हो रही है, इट्स वेरी हॉट नाउअडेज इन द आफ्टरनून. चलो नेक्स्ट. Therefore, AP upon PB निकालें रेशियो. हमें AP upon PB का रेशियो निकालना है. What is AP? Okay, what is PB? PB is PQ plus QR plus RB. P dash, Q dash, R dash, B. So AP will be AP plus AP plus AP from 1. तो ये होगा. Therefore AP upon PB will be AP upon 3AP. That is 1 upon 3. Therefore AP upon PB equal to M upon N equal to 1 upon 3. इसको समझो. So this ratio, so for a time being हम इसको भूल जाते हैं Q and R को. So this is, ये M है from here to here, and from here to here it is N, and this is 1:2. नहीं, 1:3. 1, 2, 3 ना. देखो, M is 1, N is 3 parts. So let's start. They लिखो. They have here point P x2 y2 divides seg AB in ratio 1:3. Therefore अभी हमें x1 का वैल्यू लिखना है, y1 का वैल्यू लिखना है, बाद में x5 का वैल्यू लिखना है एंड y5 का वैल्यू लिखना है. Once you write that, using section formula. Using section formula. Therefore, x2 क्या होगा? और ये y2. x2 will be m into x5 plus n into x1 upon m plus n. और y2 क्या होगा? M into y5 plus n into y1 upon m plus n. Substitute the values. Therefore x2 हमें क्या मिलेगा? m is 1. m is 1 देखो. m is 1. x5 क्या है? 6. n is 3. x1 क्या है? -14. 1 plus 3. सॉल्व करो इसको. 14 3 are 42 upon 4. 36 होगा ना. -36 upon 4. 4 9s are. So x2 मिल गया 9 -9 y2. 1 into -2 plus 3 into -10 upon 1 plus 3. So y2 will be -2 minus 30 upon 4 minus 32 upon 4. So y2 is equal to -8. So we got x2 and y2. x2 and y2 क्या है?
-9 and -8. Therefore, coordinates of P are -9, -8. अभी now we have to go for Q and R. देखो अभी इसको हम इरेज करते हैं, एम एन एन की जरूरत नहीं हमें इसकी भी जरूरत नहीं, अभी हमें इसकी जरूरत है, एंड क्यू इज x3 y3. Now please understand, Q is the midpoint of AB, because देखो ये यहाँ 2 parts है, वहाँ 2 parts है. Okay, so now Q x3 comma y3 is midpoint of seg AB. This is from 1 using midpoint formula. So x3 will be, इन दोनों को ऐड करो, x1 plus x5 upon 2, y3 will be y1 plus y5 upon 2. So x3 क्या होगा, -14 plus 6 upon 2, that is -8 upon 2. So x3 is -4. y3 is -10 -2 upon 2. -12 upon 2 is -6. So y3 is -6. So we can write, therefore, coordinates of Q are -4 and -6. Similarly, अभी R, now QR and RB are equal, so R is the midpoint. What is midpoint formula? Similarly here, R x raised to 4 y raised to 4 x4 y4 sorry is the midpoint of sec QB, not AB, Come QB. Q is the midpoint of AB, but R is the midpoint of QB. Using AB is in form 1. Therefore, using midpoint formula, x4 will be x3 हमने फाइंड किया है, वो है -4, -6, वो यहां इस्तेमाल करना है. So it will be x3 plus x5 upon 2. Therefore, x4 will be, x3 कितना है, -4, x5 is -2 upon 2, -6 upon 2. So x4 is -3. अभी y4 is y3 plus y5 upon 2. Therefore y4 कितना हुआ,
-6 माइनस ये -4 + 6 है, सो इट इज 2/2, दैट इज 1. ध्यान दो, -6 - 2/2, दैट इज -8/2. सो y4 कितना हो गया? -4. y4 is -4. Therefore, co-ordinate of point R is 1, -4. So coordinate of R क्या है? 1, -4. तो सब आ गए. देखो इसमें ज्यादा स्पेस ले, थोड़ा कम लेना चाहिए था. We got coordinate of P, we got coordinate of Q, and we got coordinate of R. कितना है यार? 1, -4 और P का हमने फाइंड किया -9, -8. There is x2, y2. सब फाइंड कर लिए. This type of questions जो आई एम डूइंग नाउ फॉर यू, ये 10, 11 एंड 12 मार्क करो. दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम. मैं जब बोल रहा हूँ ज्योमेट्री के मार्क करो तो मार्क करो. इसमें से एक 100% आएगा तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में. और ये लेंदी आएगा तो 3 या 4 मार्क का पकड़ के चलो. 4 मार्क. ट्वेल्थ क्वेश्चन. अभी उन्होंने क्या दिया है? अभी पहले ट्राइसेक्शन था, बाद में 4 पार्ट्स था, अभी 5 पार्ट्स है. वी आर डिवाइड टू 5 पार्ट्स. बढ़ते ही जा रहा है. कोई बात नहीं. अभी हमें लगेगा विल नीड स्पेस, तो हम इसको ले लेते हैं इसे. A. What is the coordinate of A given to you? 20, 10. और ये B. What is the coordinate of B? 0, 20. Now we have to divide this segment into 5 equal parts. और छोटे हो जाएंगे. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. थोड़ा बड़ा चाहिए. यहाँ लेते हैं, इसको यहाँ लेते हैं, इसको यहाँ, इसको यहाँ. सो कॉल इट P. इसको हम लोग x1, y1 लेते हैं, तो ये होगा x2, y2. Q will be x3, y3. R will be x4, y4. S x5, y5. और इसको हम लेते हैं x6, y6. So we have to find 1, 2, 3 and 4 है. 4 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं.
let P x2 y2 Q x3 y3 R x4 y4 and S x5 y5 divides seg AB into 5 equal parts. Where coordinates of A and B x1 comma y1 and x6 comma y6 respectively. इतना तो लिख लिया भाई. अभी PQ therefore AP equal to PQ equal to QR equal to RS equal to SB. Given. अभी हम लोग क्या करेंगे उनमें वी टेक हमें गिवन हिंट तो आपको थोड़ा आइडिया आएगा. ध्यान दो R इज द मिड पॉइंट ऑफ AB तो वो मिड पॉइंट से फाइंड करेंगे. हमें सिर्फ Q फाइंड करना है. अगर Q पॉइंट फाइंड कर लेंगे ना हम लोग तो P इज द मिड पॉइंट ऑफ AQ एंड S इज द मिड पॉइंट ऑफ RB. तो PRS हम मिड पॉइंट फॉर्मूले से फाइंड कर लेंगे. Q जो है हमें फाइंड करना पड़ेगा. सो हम लोग Q का रेशियो देखते हैं. ओके हियर AQ अपॉन QB का रेशियो फाइंड करेंगे. व्हाट इज AQ? AP प्लस PQ एंड व्हाट इज QB? QR प्लस RS प्लस SB. रीजन है A डैश P डैश Q और इसका रीजन है Q डैश R डैश S डैश B. सो ये क्या होगा? AP प्लस AB, AP प्लस AP अपॉन ये होगा AP प्लस AP प्लस AP. सो दिस विल बी 2AP upon 3AP equal to 2 upon 3. Therefore, AQ upon QB equal to M upon N equal to 2 upon 3. That means Q, ये जो यहां से यहां हिस्सा है, this is 2 parts and from here to here this is 3 parts. So this is M equal to 2 and this is N equal to 3. Okay, चलो अभी हम लेते हैं, लिखेंगे here therefore point Q x3 comma y3 divides seg AB in ratio 2:3. देखो अभी हमें फाइंड करने हैं. इसका मतलब नाउ यू हैव टू फॉरगेट. इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ. You have to consider these points. So here x1 equal to y1 equal to or x6 equal to y6 equal to x1 कितना है 20,
y1 is 10, x6 is 0, y6 is 20. So using section formula, x3 चाहिए अपने को, ये x3 will be m into x6 plus n into x1 upon m plus n. y3 will be m into y6, n into y1 upon m plus n. सब्स्टिट्यूट करो, x3 n कितना है 2 into 0 plus n is 3 into 20 upon 2 plus 3. Therefore x3 will be 60 upon 5. So x3 will be 12. अब y3 फाइंड करना है. 2 गड़बड़ किया ना मैंने, लगाई तब मुझे. 2 into x1 is 20. अरे 2 into x6 is 0 बराबर है, and 3 into 20 तो बराबर तो किया मैंने. Okay, 12 right. So y3 is m कितना है भाई 2 into y6 20 plus 3 into 10 upon 2 plus 3. Therefore y3 will be 40 plus 30 upon 5. 70 upon 5. y3 will be 14. तो ये कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके y3 के, मतलब q के. दिस इज 12, 14. तो लिखो, therefore coordinate of q is 12, 14. अभी इसको भूल जाओ. ना यहां आते हैं, P हमने लिया तो ये x2, y2. देखो ना AP इक्वल टू QR, सॉरी AP इक्वल टू PQ. ये देखो सिर्फ AP equal to PQ. P is the midpoint. Use midpoint formula. Here, now P क्या है भाई? x2, y2 is midpoint of seg AQ from 1. ये. Therefore, using midpoint formula, ये
x2 will be x1 plus x3, x1 plus x3 upon 2, y2 will be y1 plus y3 upon 2. So x2 कितना होगा 20 plus 12, 20 plus 12 upon 2, 32 upon 2. So x2 will be 16. y2, y1 is 10 and 14. 10 plus 14 upon 2, 24 upon 2. So y2 is 12. तो ये मिल गए अपने का कोऑर्डिनेट्स ऑफ P 16, 12. Therefore coordinates of P are 16, 12. ये पहला मिला, ये दूसरा मिला. Now we are going to go for R. x4, y4. अभी ध्यान से देखो, इसको सब भूल जाइए, इसको भूल जाइए. All this you forget. 1, 2, 3, 1, 2. इसका रेशियो, हाँ हम इसको लेते ना P. What is P? x2, y2 ना. इसका कोऑर्डिनेट कितना है? अभी हमने फाइंड किया 16, 12. देखो Q x3, y3 ये कोऑर्डिनेट है 12, 14. Now clearly you can see Q is the midpoint of PR. तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं. नाउ P नहीं R. Q x3, y3 is midpoint of PR from 1. इसलिए R वो मिड पॉइंट फॉर्म में R आएगा. देखो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला. आप बोलोगे कैसे? देखो ये आएगा, ये दो दिया तो तीसरा मिल जाएगा अपने को. देखो ये फाइंड करना है अपने को. x3 तो x3 तो मिला है, लेकिन वो x4 आ जाएगा. देखो इट विल बी x2 प्लस x4. ये अननोन है, बाकी दो तो मिले हुए हैं. अपॉन 2. देखो मैं सॉल्व करता हूं. x3 कितना है 12, x2 कितना है 16, x4 हमें फाइंड करना है अपॉन 2. देयरफॉर दिस विल बी 12 2s are 24 plus 6, sorry 24 equal to 16 plus x4. Therefore x4 will be 8. Midpoint formula. y3, y4 plus y2 या y2 plus y4 अपॉन 2. तो y2 कितना होता है? नहीं ये नहीं आएगा, ये आएगा. y3 is 14, y2 is 12 plus y4 upon 2. So आता है ये 28 equal to 12 plus y4. Therefore y4 equal to 16. तो यहाँ अपने को कोऑर्डिनेट ऑफ R मिल गया. क्या कोऑर्डिनेट ऑफ R है? 8, 16. Now therefore coordinates of point R are 8, 16. अभी लास्ट हमें फाइंड करना है पॉइंट ऑफ S x5, y5. अभी S is the midpoint of RB.
here S x phi comma y phi is midpoint of sig RB. Therefore, midpoint formula का इस्तेमाल करो. Therefore, x5 will be x4 plus x6 upon 2. x5 क्या होगा? x4 कितना है? 8 plus 0 upon 2. So it will be 4. So x5 equal to 4. अब y5. y5 will be y raised to 4 plus y6. y4 plus y6 upon 2. y4 कितना है? 16 plus 20 upon 2. 36 upon 2. Therefore, y5 equal to 18. Last. Finally, we accommodated. And therefore, co-ordinate of S is 4, 18. यह है आपका 4, ये हो गया, ये हो गया. We got all the 4, 1, 2, 3, 4, all the 4 points के coordinate.